Here 3 raised to the power x is equal to 500. Then find the value of 3 raised to the power x minus 2. Now, can you solve this problem individually? Try to solve it. If that is not possible, then find the solution here. Given 3 raised to the power x is equal to 500, and we want to find out 3 raised to the power x minus 2. As we know that a raised to the power m divided by a raised to the power n is nothing but a raised to the power m minus n is equal to 3 raised to the power x divided by 3 raised to the power 2. What is the value of 3 raised to the power x? Is equal to 500 divided by 9. This is the answer. Very simple problem. ऐसे दिखने में बड़े दिखते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही आसान रहता है. If x raised to the power 4 is equal to 3 by 13 raised to the power minus 2 divided by 3 by 13 raised to the power minus 14, then find the value of x. What we should have to here is equal to, keep left hand side as it is, only do the operation on right side. 3 by 13 raised to the power minus 2 divided by 3 by 13 raised to the power minus 14. This is a, this is a. Use the property here, a raised to the power m divided by a raised to the power n is nothing but a raised to the power m minus n. Denominator goes to the upper side, the numerator 3 by 13 minus 2 minus 14. Okay, this minus, this minus minus becomes plus, multiplication side, same sign, always plus 3 by 13 raised to the power how much? Minus plus 12. Minus 2 plus 14, 3 by 13 raised to the power plus 12. Now, this is the value of x raised to the power 4. What it is? X raised to the power 4 is nothing but 3 by 13 raised to the power 12. We want to find out the value of x. Then we should have taken the fourth root both the side. X raised to the power 4 is equal to 3 by 13 raised to the power 4 into 3, that is 12. Now x raised to the power 4 is equal to 3 by 13 raised to the power 3 raised to the power 4. Taking fourth root both sides, x is equal to 3 by 13 raised to the power 3. This is the answer. You can solve again. 3 raised to the power 3, 13 raised to the power 3, take the division,
calculate, maybe you get the answer. Now we should have convert this term into the exponential, that is the scientific form. How it is? See here, 0.0625, हमें इसको कंप्लीट डिजिट में लेके आना है, तो यहाँ पॉइंट लेके आना है. वी शुड हैव कम टू द पॉइंट हियर. 1 2 3 4, कितने डिजिट के बाद? 4 डिजिट के बाद. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0625 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 4. अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये 4 ही क्यों लिखा है? 4 डिजिट के बाद हमारा 10 to the power, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आने वाला है. वी वांट टू शिफ्ट द पॉइंट हियर. यहाँ से पॉइंट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर. हमें कितनी डिजिट की जरूरत है? 4 डिजिट की. If I multiplied by 10 to the power 4 into 10 to the power minus 4, is there any change in the equation? A quantity, nothing else, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 1 हो जाएगी. Now point shifted to the right side, तो पॉजिटिव टर्म जो राइट साइड में पॉजिटिव आती है वो हमें यूज करना है. 625 into 10 to the power minus 4. This becomes this. Now what is 8? 2 raised to the power 3 is equal to 8. We can write here, instead of 8, 2 raised to the power 3. Again, what is 625? Here बोथ साइड हमें इक्वल लाना है, तो ये 5 raised to the power 4, आई थिंक 2 का काम नहीं चलेगा यहाँ पर. 5 raised to the power 4 is nothing but 5 into 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 625. Now what is 1 by 2? All these terms we should have, it comes in 5 raised to the power 4. Again 1 by 2 is nothing but 0.5. Again it comes in 5, no problem. 8, 1 by 8 is equal to 0.125. Okay, all the terms comes in 5. What we should you want to do here? Here we are using one property, a raised to the power n is nothing but 1 upon a raised to the power minus n. हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 by 8 raised to the power 2 minus x. क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया, इसको करके निकालना है. माइनस एक्स माइनस 2 minus 2. Then this minus becomes plus. It comes 0.125 1/8 0 or 8 remains 2. 8 to the 16 remains 4. 8 5 the 14. Raised to the power how much? 2 minus
x. Again, this 0.5 raised to the power 4 minus 3x is equal to 625 into 10 to the power minus 4 raised to the power x. Now इसको हम कर सकते हैं, फिर से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, साइंटिफिक फॉर्म में 0.125 इज इक्वल टू डिजिट यहाँ पर शिफ्ट करना है 1 2 3 डिजिट 125 इंटू 10 to the power minus 3, क्योंकि +3 यहाँ पर यूज हो गया है। तो करके दिखाता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप, समझ पाएंगे। 0.125 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power plus 3. Now multiplication of these two becomes 125 into 10 to the power minus 3. Same we can do here. 0.5 0.5 डिजिट एक से ही शिफ्ट करना है, तो 0.5 into 10 to the power minus 1 10 to the power plus 1 multiplication of these two 5 into 10 to the power minus 1. अभी ये वैल्यूज हमें इसकी जगह पर, सबकी जगह पर पुट करना है। 125 मतलब क्या है? 5 क्यूब into the power 3 minus 3 we can write instead of this. Again इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। Then finally it comes 5 raised to the power 3 into 10 raised to the power minus 3 raised to the power 2 minus x into 5 raised to the power minus 1 raised to the power 4 minus 3x is equal to 625 means what? 625 raised to the power 4 into 10 raised to the power minus 4 raised to the power x. Now we can use your property a raised to the power m into b raised to the power n raised to the power x is nothing but a raised to the power n into x into b raised to the power n into x. Just separate the power with multiplication, then it comes 5 raised to the power 3 2 minus x into 10 raised to the power minus 3 2 minus x into 5 raised to the power 4 minus 3x into 10 minus 1 4 minus 3x is equal to is equal to 5 raised to the power 3 2 minus x into 10 minus 3 2 minus x into 5
4 minus 3x into 10 raised to the power minus 1, 4 minus 3x into is equal to 5 raised to the power 4x into 10 raised to the power minus 4x. Now again multiplication of these 3 with 2 is 3 into x, 5 raised to the power 6 into 5 raised to the power minus 3x into 10 raised to the power minus 6 into 10 raised to the power 3x minus become plus into 5 raised to the power 4, 5 raised to the power 4 into 5 raised to the power minus 3x into 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power 3x is equal to 5 raised to the power 4x into 10 raised to the power minus 4x is equal to this 5 again 5 raised to the power 10, 6 plus 4 again is 6 plus 4 into 10 raised to the power minus 10 raised to the power minus 10 into 5 raised to the power minus 3x into minus 3x, this 3x, this 3x, this only be taken into 10 raised to the power 3x plus 3x is equal to 5 raised to the power 4x into 10 to the power minus 4x. Raised to the power 10, 10 raised to the power minus 10, 5 raised to the power minus 6x into 10 raised to the power 6x. एक टर्म को इधर लेके जाएंगे is equal to 5 raised to the power 4x into 10 raised to the power minus 4x. x वाले टर्म उधर लेके जाएंगे, क्या होगा? 5 raised to the power 10 into 10 raised to the power minus 10 is equal to मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में जाएगा 5 raised to the power 4x
10 raised to the power minus 4x divided by 5 raised to the power minus 6x 10 raised to the power 6x. Now 1 upon a raised to the power m is nothing but minus m is nothing but a raised to the power plus, जिसको यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी a raised to the power m divided by a raised to the power m is nothing but a raised to the power m minus n. Now 5 raised to the power 10 into 10 raised to the power minus 10 is equal to 5 raised to the power 4x minus minus become plus 6x into 10 raised to the power minus 4x minus 6x Five raised to the power 10 into 10 raised to the power minus 10 is equal to 5 raised to the power 10x into 10 raised to the power minus 10x. By 10 raised to the power 10 is equal to 5 by 10 raised to the power 10x. यहाँ नीचे चला गया, ये यहाँ नीचे चला गया, पॉजिटिव 10 बन गया. Now a raised to the power अभी बेस सेम है, just we want to equate the power, equating the power 10 is equal to 10x, therefore x is equal to 10 by 10, x is equal to 1. This is the answer. Now the next problem is find the value of under root of 6.25 plus third root of 0.729 plus under root of 1.21 whole divided by 20 under root of 20.25 bracket square. Now बहुत से बच्चे इस रूट को उस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे. कैसे? 6.25 1 by 2 into 2 plus 0.729 2 by 3 plus 1.21 2 by 2. This is not possible. इसके साथ कर सकते हैं, अकेले के साथ, बाकी इनके साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आया है. अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम ये कर सकते थे. याद रखना ये पॉसिबल नहीं है. प्लस में या माइनस में डायरेक्टली हम स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते या स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर सकते. इसके अकेले के साथ कर सकते हैं, इसके अकेले के साथ कर सकते हैं. ये स्क्वायर रूट वो ब्रैकेट का नहीं. नाउ here I raised to the power 4 is nothing but 625. लेकिन वहां पर 6.25 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6.25 डिजिट
पॉइंट्स अपना 2 डिजिट के बाद हटने जाने वाला है, तो 6.25 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 2. It becomes 625 into 10 to the power minus 2. Same way, 729 was 3 raised to the power 6. Yes, 3 raised to the power 6 is nothing but 729, but यहाँ पर क्या है अपने पास 0.729 डिजिट, 3 डिजिट के बाद 0.3 डिजिट के बाद जाने वाला है, तो 0.729 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 3. It becomes 729 into 10 to the power minus 3. Lastly, 121. 121 is, I think, 6 cube. No. 3. No. 2, 7. No. 121. I think. No, 121 is the square of 11. 11 square is nothing but 121. But अपने पास क्या है यहाँ पर 1.21. अपना डिजिट पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा 1.21 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 2. Simply 121 into 10 to the power minus 2. Now, instead of this, we can write 11 square into 10 to the power minus 2. 279. 3 raised to the power 6 into 10 to the power minus 3. Here 5 raised to the power 4 to 10 to the power minus 2. इसकी जगह पर क्या लिखना है 5 raised to the power 4 into 10 to the power minus 2. इसकी जगह पर क्या लिखना है 3 raised to the power 6 into 10 to the power minus 3. 11 square into 10 to the power minus 2. Now अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे. What is the meaning of under root? Root a is nothing but a raised to the power 1 by 2. यहाँ पर 5 into 10 to the power minus 2 raised to the power 1 by 2
plus 3 raised to the power 6 into 10 to the power minus 3 raised to the power 1 by 3 because थर्ड रूट है इसके लिए प्लस 11 स्क्वायर into 10 to the power minus 2 raised to the power 1 by 2 divided by 20.25 raised to the power 1 by 2 square। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख भेजिए, आई विल मेक इट सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ये कैलकुलेशंस जिसको आएंगे समझ लेना, मैथ के ऊपर कमांड आ गया है, अलजेब्रा। नाउ 5 raised to the power 4 था मैं यहाँ पर, एक भी मिस्टेक पूरा आंसर गलत, सो डोंट डू एनी मिस्टेक। जगह कम कर दीजिए इसलिए। नाउ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, a इंटू बी रेज टू द पावर m इज नथिंग बट, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, m n करेंगे, यहाँ पर p कर देंगे, देन a raised to the power mp into b raised to the power np. This property we are using here. AYO raised to the power 4 by 2 into 10 raised to the power minus 2 by 2 plus 3 raised to the power 6 by 3 into 10 to the power minus 3 by 3 plus 11 raised to the power 2 by 2 into 10 raised to the power minus 2 by 2 divided by, अभी इसको ही करेंगे, स्क्वायर 20.25 raised to the power 2 by 2। अभी ये स्क्वायर जो था वो यहाँ पर आगे हमने सेपरेट कर दिया। Which property we are using here? A by b raised to the power m is nothing but a raised to the power m divided by b raised to the power m. Then it becomes 2 1 the 2, 2 to the 4, 5 square into what it is, 10 to the power minus 1 plus 3 1 the 3, 3 to the 6 into 3 square into 10 to the power minus 1 plus 11 into 10 to the power minus 1 whole square divided by 2 to get answer 20.25। ये नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं दोबारा ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो टू कैंसिल हुआ, ये सिर्फ नीचे ये नहीं आ रहा है, एडजस्ट कर रहेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये और ये कॉमन निकालेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर plus 11 raised to the power 2
2 into 10 raised to the power minus 1 raised to the power 2। ये माइनस 1 हमने कॉमन निकाला और उसको रेस्ट टू द पावर 2 सेपरेट दे दिया। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज द 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड बाय 20.25। रूट का कैंसिल हो गया, मैंने बता दिया। ये स्क्वायर सेपरेट हो गया इसलिए 1/2 रूट अंडर रूट कैंसिल हो गया। 20.25 रिमेनिंग। 25 प्लस 9 प्लस 11 होल स्क्वायर इंटू 10 to the power -2। Why it is -2? Here we are using the property a raised to the power m into n is nothing but a raised to the power m into n, and minus into plus, that is minus in multiplication, minus into plus, minus into minus, plus into plus। सेम साइन है तो ऑलवेज प्लस, अल्टरनेट साइन है, अपोजिट साइन है, अलग साइन है तो माइनस, चाहे माइनस इधर रहे या उधर रहे कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइडेड बाय 20.25। नाउ व्हाट इट इज 25 plus 20, that is 45। Understand? This is 20, this is 25, it becomes 45 raised to the power 2 into 10 raised to the power -2 divided by 20.25। now 45 into 45 into 10 to the power -2 divided by 20.25। अगर हम 10 raised to the power नीचे लेके आएंगे तो एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या होगा? 45 into 45 divided by 20 into 20.25 into 10 to the power 2। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई? a raised to the power m या माइनस m is nothing but 1/a raised to the power m। नीचे जाके प्लस हो गया, so it becomes 45 into 45 divided by 20.25। now we want to calculate this। if you see the square of 45 into 45, आप अपनी मेथड से कीजिए, मैं अपनी मेथड से करता हूं, ठीक है? The 45 square is nothing but 20.25 is equal to 20.25 divided by 20.25. These get cancelled here. Value is 1. Very interesting problem. Now next problem. Find the value of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube. Bracket, all quantity is in bracket. Bracket raised to the power -3/2। अभी in this problem we can't apply directly। मैंने लास्ट प्रॉब्लम में ही बोला था कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन प्लस माइनस अगर आता है तो we are not able to apply
Directly, first of all, we want to find out the values of this. Now, 1 cube is 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64 into 4, 256 raised to the power minus 3 by 2. Now, do the addition of all this. 9 plus 27, that is 36, 256 plus 36, 292. 292 raised to the power minus 3 by 2. Now we want to find out ये क्या है, ये किसका क्यूब है या स्क्वायर है या क्या है, हमें ये फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसके लिए एक मेथड है, हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे. सिंपली 292, 2 was a 2, oh shit, is equal to एडिशन तो बराबर है ना, $256 plus 27 plus 8 plus 1, 292, correct. $73 and the prime number. No problem. 2 into 2 square into 73 raised to the power minus 3 by 2. Separate a into b raised to the power m is nothing but a raised to the power m into b raised to the power m. Using this property here, 2 raised to the power 2 into minus 3 by 2 into 73 raised to the power minus 3 by 2. These two get cancelled here. $73 raised to the power minus 3 by 2 into 2 raised to the power minus 3. इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 73 प्लस हो जाएगा a raised to the power minus m is nothing but 1 upon a raised to the power m. Using this property, दोनों नीचे चले जाएंगे. 1 upon 73 raised to the power 3 by 2 into 2 raised to the power 3. Now this is cube and this is under root 1 upon
third root of under root one upon under root of 73 cube into 2 raised to the power 3. You can simply write here 1 upon 2 under root of 73 raised to the power 3. The next problem is find the value of 5 raised to the power 0.25 into 125 raised to the power 0.25 all divided by 256 raised to the power 0.1 256 raised to 0.15. पावर जो है वो डिजिट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द फ्रैक्शन। अभी ये थोड़ा सा इंडाइसेस का भी पार्ट है, थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है, तो दोनों रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 0.25 want to convert into the fraction p by q, then अभी यहाँ पर क्या है 0.25। हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू शिफ्ट ऑन हियर, कितने डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद, देन 0.25 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 2। Why we are doing this? क्योंकि 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होने वाला है, इसीलिए 10 टू द पावर। अब 10 बेस हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ ये चेंज होता रहेगा पावर, क्यों? जितना डिजिट हमें शिफ्ट करना है, अंडरस्टैंड। नाउ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आएगा 25 into 10 to the power minus 2। माइनस 2 डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा 25 divided by 100, 10 raised to the power। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी की हमने, a raised to the power minus m is nothing but 1 upon a raised to the power m। अभी 10 स्क्वायर क्या है 100, तो डायरेक्टली हमने 100 कर दिया, तो 25 on the 25 for the 100 1/4। Now 0.25 instead of this we can write here 1/4। In the same manner हमें सबके कन्वर्ट करने हैं, 0.25 को 1/4 आ गया। नाउ 0.1 एक ही डिजिट शिफ्ट करना है, 1 into 10 to the power 1 minus 1 divided by 10, 0.1 1/10, 0.15 2 डिजिट के बाद 0.15 10 to the power 2 10 to the power minus 2, सेम
15 divided by 100. 5 is a 15. 20 3 by 20. ओके नाउ यहाँ तक तो हो गया अपना। अभी हमें देखना है कि ये 5 के इसमें क्या क्या चेंजेस हो, मतलब 5 का कौन सा पावर है। 5 into 5 into 5 is equal to 125, मतलब 5 raised to the power 3. Instead of 125 we can write 5 raised to the power 3 यहाँ पर। Again 256 125 into 5. No, I think it is 3. दो पाएंगे 64 into 2 128 into 2 256. Yes, 6 7 8 2 raised to the power 8. Now instead of 256 we can write here 2 raised to the power 8. Now substitute all these value. 5 raised to the power how much? 0.5. 1 by 4 into 125. 125 मतलब 5 raised to the power 3 raised to the power 0.25. 0.25 मतलब 1 by 4 all divided by 2 raised to the power 0.1 8 raised to the power 1 by 10 into 2 raised to the power 8 raised to the power 3 by 20. Now is equal to, now here 5 raised to the power 1 by 4 into 5 raised to the power 3 by 4 divided by 2 raised to the power 8 by 10 into 2 raised to the power 24 by 20. अंडरस्टैंड क्या किया हमने? प्रॉपर्टी यूज की a raised to the power m raised to the power n is nothing but a raised to the power m into n. Now again a raised to the power m into a raised to the power n is nothing but a raised to the power n plus n. पावर का एडिशन बेस अगर सेम है तो यहाँ पर बेस सेम के इसमें लेके आएंगे, क्या होगा? 2 2 2 2
बेस से बनाए तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। नाउ 5 raised to the power 1/4 plus 3/4 divided by 2 raised to the power 8/10 plus 12/10. 5 raised to the power 4/4. Denominator same, 1/4 plus 3/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया तो आंसर वही आएगा। डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन 4, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज 4, द सेम वे हियर अगेन 8 plus 12 20, 2 raised to the power 20/10. Now do the calculation here. 4 get cancelled, 10 over 10, 10 to the 20, 5/2 raised to the power 2, but 2 raised to the power 2 square is 4, answer is 5/4. Now the next question is, find the positive square root of each. Why it is why here positive square root specially mention here positive square root, because the square root of, suppose square root of 4 is nothing but plus or minus 2. Why? Multiplication of -2 into -2 is equal to 4 and 2 into 2 is also 4. हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव रूट है, तो इसीलिए स्पेशल मेंशन किया है। इट इज द फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ हियर 5 square into 3 raised to the power 4 into 2 into 7 raised to the power 2 into 2 divided by 5 raised to the power 0 into 7 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 into 2. Why हमने क्यों किया ये 2 के बाजू में क्यों निकाला? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अभी हम सबका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका रूट फाइंड करेंगे। 1 डजंट मैटर, दैट इज द 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, स्क्वायर भी 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 into 3 raised to the power 4 into 7 square divided by 7 into 3 raised to the power 3 whole square. Any problem? प्रॉब्लम आता है तो बोल देना। ये हमने ये 2 बाजू में निकाला, ऊपर लेके आए, ये 2 सबका 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट के ऊपर दे दिया। नाउ ये 7 और ये 7 गेट कैंसल, ये 3 यहाँ पर 1 ही बचेगा, मतलब 3 बचेगा। टोटल आंसर यहाँ पर 3 बच गया। 5 into 3 into 7 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा? 35 into 5 नहीं तो 105 raised to the power 2. We want to find out the positive square root, so taking square root under root of 105
square is equal to 105